Okay, so our hypervisor installation is almost finished, and that is the IP address that we are getting from DSCP scope for this hypervisor, which is 10.53, right? And host name is gen server -02. So same, we can cross verify with our DSCP scope here. So if I go here in my DSCP scope, if I can refresh it into the address leases 10.53, this is a new IP address which has been allocated to my hypervisor. Okay, so that installation of this hypervisor is just for your information only, means it is a simple operating system installation, how to install any Linux based operating system on any machine. So I'm not going to use that hypervisor in this lab. Why? Because I am already having one hypervisor which I have created as a bare metal hypervisor here, right? So let's reboot this hypervisor first. Okay, so what I will do, this is just a demonstration how to install hypervisor, right? And how to create hypervisor, as I have already created a separate hypervisor in my lab. So I am shutting it down, and what we will do, we will use that hypervisor with our site. So you can turn off your hypervisor by going there, like reboot or shut down server, enter the root user password which we have created earlier. Okay, so now what we have covered, we have covered how to install and configure the hypervisor. Now we have to create a site, like how to create a site using the resources what we have created, right? So for the same, what I have to do, I have to turn on my DDC2, and we will use this hypervisor. This is the same screen. We will use this hypervisor. The only thing is that the IP address of this hypervisor is changed. It's 10.103 in my case, and the hypervisor which we have deployed here, the IP address for this hypervisor was 10.53, right? So that I have just shown you how to install the hypervisor now. And this okay, before that, let me tell you one more thing. This application Gen Center, okay? So basically Gen Center, it is a desktop application. You can install this application on any of your system, right? Let me remove hypervisor right now. Okay, so basically this is a basic application, and let me check the setup if I have here. hmm Wait a minute, my laptop not responding properly. Hmm. Okay, wait a minute. I'm not getting the exe file. Let me eject this where it is.
Okay. So this is the application. It is a simple desktop application, just like Office 365 or VLC media player or any application you guys installing. Just open it and it will be a simple installation. Like in my case, it is asking to repair or remove the existing version. So basically, this is a GUI application which help us to manage the hypervisor. Like Citrix hypervisor means if I go here, this is my Gen Center application. I have already installed it. Click on add to add your hypervisor. Enter the IP address of your hypervisors. So in my case, it's 103. Username will be root only. Enter the password for root user. And now it will synchronize the entire hypervisor, right? So if you go here into the console, this is our console. So basically, what is the problem here and why this application is so useful? The reason is that you will get your hypervisor in this format only, like in CLI mode, in Linux mode, right? So just suppose if you have to deploy any virtual machine in CLI mode, what you have to do? You have to go to the local command shell. You have to enter some password for root user, and you will get a command line screen, right? So you have two options here. Either you can remember the thousand of commands which is available in Linux, right? So which is not quite possible. We need some GUI infra, right? We can right click or we can left click or we can create the virtual machines, right? So for the same, let me go back to the console again. So for the same, we have got one application, desktop application from Citrix, which is Gen Center, and Gen Center allows us to manage our hypervisor in GUI mode, right? So now just suppose if I have to create a VM on this, right? So what I have to do? I can do right click here, new virtual machine, or I can click here in center. I can create new virtual machine. I can select the operating system, whatever is required. We have multiple predefined templates from Citrix for Linux, for Red Hat, for Oracle, Debian, CentOS, multiple. So just suppose I have to deploy Win10 operating system. So I will select Win10, click on next, name it like Windows 10, next. Now it is asking for ISO media. So we can select the ISO media of Windows 10 where it is Windows 10, next. But I'm not going to deploy any OS right now. We will cover this later. I'm canceling this. I'm just showing how to create VMs on hypervisor. Those are the VMs which I have already created on this hypervisor, but you have nothing to do with those. We will create a separate, okay? So now in this one, our task is to create a site, right? So let's log into DDC. So Ankur, you are using VMware as a hypervisor or Citrix hypervisor is there? सर VMware हाइपरवाइजर भी है, सिट्रिक्स हाइपरवाइजर भी है, दोनों ही है। सिट्रिक्स का कौन सा वर्जन है? सर सिट्रिक्स हाइपरवाइजर का वर्जन का मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ जेन सेंटर यूज करता हूँ मैं। जेन सेंटर यूज करते हो ना? हाँ एंड सिट्रिक्स जो कॉन्फ़िगर्ड है, राइट, वो जी, पीवीएस इंफ्रा में है या एमसीएस में? व्हाट यू आर? एमसीएस में है, एमसीएस में। एमसीएस में कितने यूजर्स हैं जी टोटल? हाँ सर, टोटल यूजर्स हैं मेरे पास सिट्रिक्स के समथिंग अराउंड 2200 बस, ओके, तभी ज्यादा एमसीएस नहीं है। है। ओके, हम्म, सो नाउ for the first time what we have to do, we have to open Citrix Studio as we have configured this earlier with all the required core components, and I have got some updates here. Let's see. Mm-hmm.
महेश, अगर हम जब साइट क्रिएट करने की बात करते हैं तो साइट क्रिएट करने में क्या क्या चीजें हैं? साइट क्रिएट करने से पहले हमें हमारा नो। हाइपरवाइजर चाहिए होगा। अच्छा। देन हमें लाइक व्हेन डिलीवरी वी आर कंट्रोलर टॉक चाहिए होगा। यस, बोलो आप क्या बोल रहे like when we are talking about we are going to create a site. हो? So what all we are going to like create in that site, like? Look, we have deployed multiple things, like we have deployed Mm-hmm. Citrix Studio, we have deployed Hypervisor, right? We have deployed Yes. the licensing server, we have even I'm not getting the names. Director, License, right? studio, director. Okay, so we have configured all those server, including SQL server itself, right? And we are having Active Directory server, right? So Mm-hmm. we need some site to connect all those things together, right? So far, all those servers are separate, right? Okay, got So it, got it. now we are going to connect each and every component together, right? Okay. So initially from Citrix Studio, we will get we are we are having three options available here, right? For a site setup, for a remote PC access, and to scale up your deployment. So as we do not have any existing site, so we cannot scale up our deployment. Why? अगर हमारे पास कोई existing site होता तो हम इस particular डिलीवरी कंट्रोलर को उसमें ऐड कर सकते थे। रिमोट पीसी एक्सेस इज फॉर द फिजिकल मशीन्स, लाइक अगर आप ऑफिस में कोई फिजिकल मशीन यूज कर रहे हो जिस पे विंडोज सर्वर या विंडोज 10 कुछ भी इंस्टॉल्ड है, उसको भी आप रिमोटली वर्चुअलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिट्रिक्स, राइट? But in our case, what we are going to do, we are going to create a new site to deliver application and desktop to our users. So select first one. So now it is asking for a site name. So in my case, okay, so site name, it could be your office location, it could be your office name, it could be your name, but it should be identical. So in my case, just suppose my office is located in Indore, Madhya Pradesh, so I can enter Indore. Okay, so that particular site denotes to my Indore location. In the same way, you can enter anything. Okay, now click on next, or I can mention it like Indore office. Okay, now these are the very important thing, like it will create a database, three database, like site, monitoring, and logging. Okay, and Indore office is my site name, so it will create three database. Site, it will contain all the information related to site. Monitoring, it will monitor the utilization kind of thing, the hardware or network utilization. And logging will monitor the logging sessions for end user, like when users logging in, what users are doing, what Citrix administrators are performing the actions, means अगर कोई भी यूजर कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, या फिर हमारा कोई सिट्रिक्स एडमिनिस्ट्रेटर है वो मशीन कैटलॉग क्रिएट करता है या कोई भी ग्रुप पॉलिसी में चेंजेस करता है, वो सारे के सारे लॉग्स हमारे लॉगिंग डेटाबेस में स्टोर होंगे, राइट? Mahesh, one question. हम्म If we need to check the connectivity हम्म of the database or हम्म something, so how we can check it from here? it will automatically connect. Wait for it. So here, as you can see, the location of SQL server, it is showing like localhost less SQL server. Why localhost? Because we have installed SQL in same machine, right? Yes. Here it is, same machine. So अगर हमारा SQL डेटाबेस किसी और सर्वर पर होता तो लोकल होस्ट की जगह हमें उस सर्वर का आईपी एड्रेस या होस्ट नेम मेंशन करना होता, राइट? मींस अगर Correct. प्रोडक्शन में अगर आपका SQL सर्वर किसी और लोकेशन पे है तो आपको वो मेंशन करना होगा। सिंपली ये सारे के सारे डेटाबेस हमारे इस SQL एक्सप्रेस में कनेक्ट हो जाएंगे, और सिंपल है, अगर SQL सर्वर की कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम हमारे SQL सर्वर का आईपी एड्रेस पिंग कर सकते हैं, राइट? अच्छा। इन uh, सिंपल हमारा एसक्यूएल सर्वर सेम मशीन पे है तो सेम मशीन को पिंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट? बिकॉज दिस इज अ लोकल होस्ट, राइट? मींस
what we have done, we have configured our SQL server on this machine, which is 10.54, right? So अगर मैं Okay. 10.54 को पिंग करता हूँ तो for sure we will get response like we are getting proper reply from SQL ये server. Okay. इंटरव्यू का क्वेश्चंस था एक्चुअली, हम्म ये पूछा गया था मेरे से उस टाइम। सिंपल है, अगर किसी भी चीज की कनेक्टिविटी चेक करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिंग, राइट? ओके। अगर पिंग आ या रहा है गॉट इट। प्रॉपरली तो दैट इज फाइन, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। Because there is no other way na to check the connectivity. We have to check through network commands only. So now it is validating the database. So now it is asking for the license server. Again, we have installed license server on the same machine, that is localhost. Port number which I told you earlier, 27,000. It is very very important. And it is already connected to a license server. अगर हमारा लाइसेंस सर्वर किसी और मशीन पे होता तो हमें वहां पर लोकल होस्ट की जगह वो आईपी एड्रेस डालने के बाद देन कनेक्ट पर क्लिक करना होता, राइट? ओके। एंड अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे लाइसेंस सर्वर के लिए जो पोर्ट है 27,000 टू 27, आई गेस 009 है। हम्म, तो हम इसमें से कोई सा भी यहाँ पे पोर्ट नंबर दे सकते हैं 009 तक के बीच का, करेक्ट? हम दे सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट 27,000 इज गुड, जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस ओके। आर द इंटरनल कनेक्टिविटी ना, वी आर नॉट यूजिंग लाइसेंस सर्वर ऑन एक्सटर्नल साइट, सो दैट इज फाइन। आप हाँ। यूज कर सकते हो बट आपको मैनुअली फिर वो वाला फायरवॉल पोर्ट ओपन कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क टीम, राइट? ओके। एंड यूजर फ्री 30-day ट्रायल। ओके। सो बाय डिफॉल्ट हमें 30 डेज ट्रायल मिला है, राइट? एंड दैट इज इनफ फॉर टेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव। ओके, अगर कोई लाइसेंस है आपके पास अवेलेबल तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक हियर एंड यू हैव टू allocate the license file, the LIC file, एंड जो LIC फाइल है वो आपको सिट्रिक्स से मिलेगी जब आप लाइसेंस परचेस करेंगे। ओके। तो वी विल गो विथ 30 days only. Next. Now it is asking to connect to the hypervisor, like which hypervisor we are using, right? So what we can do, we have to enter the hypervisor address. It should be http colon double slash gen server hyphen 01 dot techmtech.com. So please be remember, जब भी आप कोई कनेक्शन नेम लिखते हैं so always prefer to use FQDN, that is fully qualified domain name. मीन्स आप आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं लेकिन हमें हमेशा होस्ट नेम यूज करना पड़ता है, और जो कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होना चाहिए जिसका अपडेट डीएनएस में रिकॉर्ड होना चाहिए, लाइक डीएनएस रिकॉर्ड में भी अपडेट होना चाहिए। उससे होता यह है कि हमारा आईपी नेम टू होस्ट नेम रिजोल्यूशन, अगर हमारा होस्ट नेम किसी भी रीजन से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है फॉर एनी रीजन, तो वो आईपी एड्रेस पे ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा। लेकिन महेश अगर आप जी, ये सिर्फ जो जेन सर्वर 01 डॉट टेकएमटेक डॉट हम्म, कॉम है, ये आपने जो सेपरेटली दूसरे अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रखा है, ये उसी का है ना? हाँ उसी का है, मैं अपना पुराने हाइपरवाइजर यूज कर रहा हूँ यहाँ ठीक है, ठीक है। पे। ओके, सो नाउ इट इज आस्किंग फॉर द services what you are going to use. So we are going to use Citrix services only, MCS or provisioning. Okay, and name it like Jan server hyphen 01. This will be your connection name. Okay. ओके। और ये जो सिट्रिक्स वर्चुअल मशीन्स हमारे पास एमसीएस और पीवीएस है, इसके अलावा जो इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे अदर टूल्स, तो ये अदर टूल्स में क्या क्या है? अदर टूल्स पर सिर्फ फिजिकल मशीन्स हैं, लाइक अगर आपके पास कोई भी हाइपरवाइजर नहीं है, आप फिजिकल मशीन को डायरेक्टली वर्चुअलाइज करना चाहते हैं तो ये उस केस में यूज होगा। अच्छा, ओके। नेक्स्ट।
So what it will do, it will validate the credentials what we have given for Gen server 01. Okay, our connection is verified. So now it is asking for storage management, like how to manage your storage. So we have two options here. Either we can use the shared storage or we can use the local storage, right? So here what we will do, we will use the local storage of hypervisor, that is 120 GB we have allocated to our hypervisor. And in production, you will always get the shared storage. Shared storage means the network storage devices. Why? Because अगर हमारा hypervisor डाउन हो जाता है किसी भी XYZ रीजन से, तो हमारा जो डेटा है वो हमारी नेटवर्क स्टोरेज पे रहेगा। लेकिन हम टेस्ट लैब में नेटवर्क स्टोरेज यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी डू नॉट हैव दोस नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस, राइट? बट इन प्रोडक्शन यू विल गेट the iSCSI storage or SAN or NAS. Okay, so here we are going to perform all the operations on the local storage of hypervisor. Click on next. So here is a summary what we have selected. We will deploy OS on local storage and we will deploy temporary files as well on the local storage. Network 0 is fine, which is our default network, and name that as jan-network-01. It should be identical, means someone able will be able to identify by the host name, like Jan for Jan server and for network, and 01 is for connection name to Jan server 01 what we have given, right? So now it is asking for additional features like FB publishing, right? So so far we do not have any FB server. We will create application server in upcoming sessions. Okay, so we are not going with that additional feature. We will create our own application server. Okay, here is a summary what we have selected. This will be our database, monitoring, logging, and site. That will be our hypervisor DDC2 license server, Citrix hypervisor. So what we did, we have configured all those things together, like DDC, then license server, then Citrix hypervisor, and the storage and the network, right? So now our site will be created using those configurations, and those configurations will be stored in our Office site database, right? What we have configured for this site, all those logs will be there into the site database only. Click on finish. So it will take a while, and in some time it will create our first site, which will be Indore office in our case. Okay. ओके महेश जी, एक क्वेश्चन। जो एडिशनल फीचर्स में आपने ऐप व्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, हम्म तो फिर ये अब हमें सिट्रिक्स स्टूडियो के कंसोल में वो ऑप्शन दिखेगा नहीं, राइट? या हम्म। फिर वो दिखेगा अभी भी? वो तो दिखेगा ना, बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, लुक, वो दिखेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम चीजों को बाद में मैनुअली ऐड कर सकते हैं। मींस अगर हम ओके। अगर हाइपरवाइजर सेलेक्ट नहीं भी करते हैं यहाँ पर, तो बाद में हाँ हाँ। आफ्टर साइट क्रिएशन वी विल बी एबल टू ऐड हाइपरवाइजर मैनुअली। वी हैव दोस ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? ओके ओके। बट अगर मैं साइट पहले क्रिएट कर देता, देन अगर आपको बोलता कि इसमें हाइपरवाइजर ऐड करना है, तो वो क्वेश्चन फिर थोड़ा टिपिकल हो जाता आप लोगों के लिए कि साइट बन चुका है फिर हाइपरवाइजर क्यों करना है। व्हाई? बिकॉज वी नीड समथिंग टू स्टोर आवर virtual machine. We need the hypervisor, right? So अंकुर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टोरेज यूज कर रहे हो, दैट इज लोकल स्टोरेज और नेटवर्क स्टोरेज? नहीं सर, नेटवर्क स्टोरेज है। किसका है वो, कौन सी कंपनी का है, एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसका? नेटऐप का है। और नेटऐप के अलावा अभी हम लोग नेटऐप, हिटाचिलन ये सब यूज कर रहे हैं। ओके। और इनका स्टोरेज साइज है, नेटऐप का जहां तक मुझे पता है सर 1100 TB है। ओके, एंड इसका जो रीड राइट ऑपरेशन है वो कितना है? सर इतना आइडिया नहीं है मेरे को। आइडिया लिया करो, जब किसी सर्वर में घुसा करो ना, तो पूरा आरएनडी कर दिया करो। कुछ नहीं होगा, सर्वर डाउन होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। मैंने नहीं सर, यहाँ थोड़ा सा मतलब डर लगता है अंदर घुसने में, कुछ इशू ना हो जाए हमारी वजह से। अरे नहीं नहीं, डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली आई थिंक आज से 4 5 6 साल पहले जब मेरा
करियर आई थिंक स्टार्ट हुआ था या मिड में था. आई थिंक आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2014, राइट. सो उस टाइम पर मुझे एक कंपनी मिला था जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स थे. इवन एक छोटा सा काइंड ऑफ डेटा सेंटर था. खेलने के लिए बहुत सारे सर्वर्स मिल गए थे एट दैट टाइम. तो वहां पर मैं सिंगल हैंडेडली करता था क्योंकि छोटी कंपनी थी. कोई डाउन हो भी जाता था तो हम लोग क्या करते थे, सब कुछ स्विच बंद किया, स्विच चालू किया, सब 5-10 मिनट में सारे सर्वर ऑन. सो ऐसे भी मैंने काम किया हुआ है. एंड उस महेश जी, टाइम अभी भी आप हो, स्टिल आर यू वर्किंग और लाइक यू आर डूइंग दिस ट्रेनिंग पार्ट लाइक नो नो एज अ नो फुल टाइम? नो नो नो, इट इज नॉट अ फुल टाइम, नॉट इवन अ पार्ट टाइम फॉर मी दैट ट्रेनिंग पार्ट. ट्रेनिंग पार्ट तो अगर मेरा मन करता है तो मैं कर लेता हूँ. इफ आई हैव टू गाइड समवन आई कैन डू दैट, राइट. But my ओके full-time job is with, I'm working as a data center architect for Infosys right now. ओके ओके. So that is my full time. I have to work for my, like, for my clients only. So that is my full-time job. Training, it is a अच्छा. part. I have started those things in COVID actually. In COVID, we all was working from home. और जब work from home हम लोग कर रहे थे, तो उस टाइम पर हाँ हाँ. वर्क फ्रॉम होम में कुछ भी नहीं होता था. सुबह 2-4 मीटिंग किया, देन शाम को किया, राइट. एंड दिन भर ideal. So on that time, I started recording myself. I put multiple videos, uploaded multiple videos on YouTube, and getting a good feedback. So further, अभी भी अगर कोई escalation आता है from my client end, so जो मेरा teaching part है इसको मैं अभी stand by पे कर देता हूँ. कई बार करना पड़ता है for XYZ reason. So this is quite temporary. Even I cannot consider it as a part time as well. But yeah, it is going good actually. ओके, नाइस. So I'm into the teaching part, but not full time. And I will never be for full time. Why? Because my core interest in technology itself, like in data centers only. Okay, so our site has been created, right? As you can see, multiple options here. Machine catalog. So basically, machine catalogs are the collection of physical or virtual machines. In upcoming sessions, we will learn how to create the machine catalogs. Delivery groups are the groups. With the help of delivery groups, Ankur, you are working in Citrix. What are the utilization for delivery group? यूटिलाइजेशन इन द सेंस सर, यूटिलाइजेशन समझ थोड़ा सा मुझे बताइए. डिलीवरी डिलीवरी ग्रुप क्या ग्रुप है से इसमें? हम क्या करते हाँ हैं? सर, इसमें हम एप्लीकेशन और डेस्कटॉप डिलीवर करते हैं, अपने पब्लिश करते हैं अपने यूजर्स के लिए. ओके, मतलब डिलीवरी ग्रुप की हेल्प से जो हमने मशीन कैटलॉग क्रिएट किया है ऊपर, मतलब जो वर्चुअल मशीन हमने यहाँ पर क्रिएट की है इन मशीन कैटलॉग, उस वर्चुअल मशीन को अगर पब्लिश करना हो किसी स्पेसिफिक यूजर को, तो उसके लिए डिलीवरी ग्रुप काम आता है. मीन, डिलीवरी, राइट अंकुर? जी बिल्कुल सर. एप्लीकेशन क्या होता है? सर एप्लीकेशन, अपन जितने भी एप्लीकेशन यूजर्स को पब्लिश करते हैं ना, तो अपन यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब एक पर्टिकुलर गोल्डन इमेज से एप्लीकेशन उठा के यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं अपने यूजर्स को. हम्म. ओके, सो वन पॉइंट है, जो तुमने गोल्डन इमेज बोला, उस इमेज को कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में मास्टर इमेज ही बोला जाता है, राइट. मास्टर इमेज. जी 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 तो सर. बंदे अपने हिसाब से उसको मास्टर इमेज, टारगेट इमेज, हाँ गोल्डन इमेज, कुछ हाँ, भी नाम दे देते हैं. बट स्टैंडर्ड मास्टर इमेज है, लेकिन कई जगह आपको गोल्डन इमेज भी बोलते हुए मिलेंगे लोग. गोल्डन. सो वो गोल्डन इमेज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम कवर करेंगे. एंड बेसिकली एप्लीकेशन में क्या होता है, जस्ट लाइक आवर एप्लीकेशन सर्वर जो हम क्रिएट करने वाले हैं, अगर कोई एप्लीकेशन हमें पब्लिश करनी हो टू पर्टिकुलर यूजर, तो हम एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं या फिर हम एप्लीकेशंस के ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन हम पब्लिश कर सकते हैं. ओके. पॉलिसी इसके थ्रू. महेश जी, हम्म. Mahesh ji, so the basic difference between machine catalogs and delivery group, like the machine catalog, it will not be having the users, right? It will be having only the machines. राइट. But when we are talking about the delivery group, it will be having machine with the user who can access that machines. राइट. कमिंग टू Okay. द पॉलिसी, सो
policies are quite similar to active directory policies or group policies which we use. With the help of policies हम restrict कर सकते हैं किसी भी users को कोई भी action perform करने से. Okay, I have seen one more option over, not on this one. Mhm. There was one filtered option also. Usually Mhm. comes with the policies. Like this is unfiltered. There will be one more option like filtered. So what is the difference between unfiltered and filtered here in policies? Unfiltered is it is a predefined by Citrix. We have not created any policy so far, right? When we will create it, when we will create a policy by our own, that comes under filtered operation. Means we have So filtered few that option, policies, okay, so that option will come once we'll create the policy. right? Okay. Unfiltered means this is the default policies with number of policies covered, right? So if I edit this policy, Sure. I will get thousand of options over there, right? Which is Okay, unfiltered which means has it is consider all the policies. Like you can see, we have drop down menu here, and you can assume the count like in thousand or even in even I'm not sure the count. Okay, but if I select this enable or disable multiple options I will get, that we will cover later how to create a separate policy. Okay, coming to the logging part, as I told you, logging is responsible for store the logs like what user is doing, what kind of action. So as you can see here, this is my user ms185426, and what I have performed, I have created a site, I have set up a site, I have edited a John. Whatever the action I have performed at what time, all those logs are stored here, right? Mhm. So into the configuration part, so this is our site name. These are the database what we have created. Into the administrator, you will get list of all the Citrix administrator. In my case, only one administrator is here, which is MS185426. In a same way, you can create multiple administrator. Like if you have got new person in your infra to manage Citrix, so you can add that user Mhm. in that list. Okay, and even you can select the Okay, role for that particular user, like full administrator or read only mode, or got it. if you want that particular user to deploy machine catalogs only, so you can select those roles as well. Into the Okay. controller, you Meh will get list of the delivery controller. Yes. महेश जी एक चीज बताना आप, here we are not talking about the farm and like zone, right? Mm-hmm. ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ मतलब मेरे को कंफ्यूजन है इस चीज में, फार्म जोन और साइट वगैरह में. फॉर्म एंड जोन जो होता है वो एमसीएस में नहीं आता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ पीबीएस. ओके, नॉट एमसीएस. ओके, तो अभी हम ये एमसीएस के उस पे चल रहे हैं ना? हाँ, अभी हम एमसीएस कर रहे हैं तो फॉर्म ऑन जोन यहाँ पर नहीं आएगा. ओके. ओके, सो दिस इज आवर ओके, नॉट कंट्रोलर. इवन वर्कर ग्रुप. वर्कर ग्रुप गया, वो टाइम गया. वर्कर ग्रुप जब अच्छा अच्छा अच्छा. सिट्रिक्स जब 2014 में यूज किया जाता था या 2015 में यूज किया जाता था तब आता था. नाउ अपडेट हैड बीन रिलीज, सो वर्कर एंड ग्रुप की जगह हमारा ये सब आ चुका है. एमसीएस, पीबीएस, ये सब बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं अब. नाउ वी हैव ओके, डिलीवरी ग्रुप, वी हैव मशीन कैटलॉग्स. जो वर्कर्स और जो तुम बोल रहे हो वो गॉट इट, बहुत गॉट पुराने इट. वर्जन में यूज होता था. ओके, ठीक है, ठीक है. इनटू द होस्टिंग पार्ट यू विल गेट the list of hypervisors. Like if you have if you have got new hypervisor in infra, you can add from it here, right? Licensing is our license server. So hosting basically is like it's all about like the Zen server. You can use any hypervisor here. Even you can add. Like oh sorry, any hypervisor. Yes, you will get a list. Like if you click here, we have multiple options here like Microsoft Hypervisor, vSphere client, or Wake Up Manager. No one going to use the third one, but those two are very popular. Citrix and VMware Hypervisor. Okay, आ गया. means Okay. means if you means like बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है. दे गाइस स्टिल यूजिंग VMware Hypervisor. So
उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। अगर उनको सिट्रिक्स ठीक है। हाइपरवाइजर नहीं यूज करना है तो वो VMware के साथ भी जा सकते हैं। लाइसेंसिंग समथिंग रिलेवेंट टू लाइसेंस। स्टोर फ्रंट सर वी हैव। मेरा 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 एक छोटा सा मेरा क्वेरी था। हम्म। आ, थोड़ा सा लाइसेंसिंग पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा गाइड कर पाओगे? सेम बताओ सेम विद मी आल्सो। बताओ। देखो, लाइसेंस सर्वर जो होता है बेसिकली, जो हमारा डिफॉल्ट लाइसेंस सर्वर है जो कि हमें 30 डेज के लिए मिला हुआ है, लाइसेंस सर्वर जो होता है उसका जॉब ये होता है, लाइक अगर आपने सिट्रिक्स से 100 कंप्यूटर्स के लिए लाइसेंस लिया है, मींस आप 100 वर्चुअल मशीन्स पब्लिश कर पाओगे टू एंड यूजर एट अ टाइम। मींस आप क्रिएट कर सकते हो 500 मशीन्स, दैट इज फाइन, लेकिन एट अ टाइम 100 मशीन से ज्यादा रन नहीं होगा टू एंड यूजर्स। बाय बिकॉज आपका जो लाइसेंस सर्वर है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा उस चीज को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो 1000 यूजर्स हैं एंड आपके पास लाइसेंस है सिर्फ 500 यूजर्स का, राइट। सो उस केस में क्या होगा, कितनी पॉसिबिलिटी है कि पूरे के पूरे 1000 यूजर एट अ टाइम लॉग इन करेंगे सिस्टम में? जीरो, राइट। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि बंदे शिफ्ट में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एट अ टाइम 500 यूजर ही लॉग इन करेंगे। तो 500 यूजर के लाइसेंस से आप 1000 यूजर को मैनेज कर सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट जब 500 मशीन्स ऑन रहेंगी तो बाकी की 500 मशीन्स हमें पावर ऑफ स्टेट में रखनी पड़ेंगी, राइट। जी ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट डन एंड वी हैव ओनली 2 minutes left. In upcoming sessions we have covered till here, we have created a site. In the next, we will learn how to install VDA agent. Then we will learn how to create machine catalogs. Then we will learn how to create the delivery groups. Then how to install and configure storefront. So we still have 4 sessions with practicals, okay? And that we will महेश cover जी, up. Mm-hmm. ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी ये आप लाइसेंसिंग पे गए थे ना, तो वहाँ मॉडल लिखा हुआ था यूजर डिवाइस। Mm-hmm. सो बेसिकली लाइसेंस यूजर की जब हम बात जी करते हैं तो लाइसेंस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, इधर वी कैन प्रिक्योर अ यूजर लाइसेंस और इधर वी कैन प्रिक्योर अ डिवाइस लाइसेंस, राइट। अगर हमने डिवाइस लाइसेंस लिया है तो हम उस डिवाइस पे कितने भी यूजर्स को लॉगिन करा सकते हैं, लेकिन अगर हमने यूजर लाइसेंस लिया है फॉर 100 यूजर्स ओनली, सो हम 100 यूजर्स को एंटरटेन कर पाएंगे, राइट। और ये लाइसेंस को हम डीप में पढ़ेंगे जब हम लाइसेंस सर्वर पे काम करेंगे इन अपकमिंग सेशंस, ओके। श्योर। ठीक सर। So this is just an थैंक यू। overview. Okay, guys. So I'm having. Okay, बाय it's सर। almost done. या, Okay, थैंक guys. यू। Bye. Have a nice day. थैंक यू बाय अंकुर। सर। या, थैंक यू। थैंक बाय यू। बाय।